Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon once again. Take care. So I hope everyone remember what we have studied till last class, right? If anyone have any issue, you can just ask. Okay. Now we will be revising what oscillations disks. What you're talking about, Abhiram? TPP discussion, right? We will do it. We will do it. Don't worry. We'll do it. Okay, we'll do it next class. Okay. I'll keep some extra classes, okay, because I'll be keeping some extra classes separately for JEE and NEET, okay. So I've given some work, right? Basic problem, right? हम लोगों ने last class में देखा था the basic equation of wave. I hope all of you remember. Tell me. I hope all of you remember, right? In these two lectures, my speed is fine. Tell me, my speed is fine. All of you are able to understand properly, right? बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा ना? Okay, so yeah, so we talked about the basic expression for wave, yes or no. So I can say that any wave, or basically the position of any particle executing wave motion or in wave motion can be represented in terms of x and t, yes or no? Tell me, yes or no, right? If it is sinusoidal, then it is written by a sine omega t plus minus kx plus phi, right? Or kx plus minus omega t plus phi. Doesn't matter because you can, right? You can rearrange depending on the phase, right? Now this is just for sinusoidal, but we know that we can have different type of waves which follows certain condition. I hope all of you remember the condition. The condition was d square y by dt square is equal to, tell me, omega square by k square into d square y by dx square. Yes or no? We have derived this, which is basically, now this term is basically what? Wave velocity, v square into d square y by dx square. So any wave, right? Okay, which satisfy this, okay, is your, any function which satisfy this condition is your wave. Okay, so let's write one expression. Y, which is a function of x and t, is given by 0.8 divided by, this is very famous question which is found in many books. Okay, so some of you might have already seen that, plus 5t whole square plus 5. Okay, right? Now, first of all, first you should ask, sir, is it a function of x and t, or is it in form of f of ax plus bt? Tell me, yes or no? Is this function in form of f of ax plus bt? Step by step. Yes? Shreya, Sumaya, Riya, Anamika is here. Anamika is not here. Okay, so yes, 4x plus 5t, yes. And we know that, right, whenever we have this, right, so it is omega t plus kx, yes or no? Tell me, yes or no? The function is omega t plus kx, right? So here, what is omega? Just replace, what is omega? Omega is equal to 5 and k is equal to 4, yes or no? Tell me everyone, raise your hand, yes or no? इतना पता होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा अब तक. I'm just trying to tell you that can you find the parameters from this expression? Okay, now the question is this, right? The question is this. Question number A is, this pulse, this is an expression of pulse, right? Is moving in which direction? Is moving in which direction? Tell me, yes or no? Is moving in which direction? 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 Is
Positive x direction or negative x direction? Tell me. That is the first question. कोई नहीं solve करना है, सिर्फ question देख बताना है, right? B. In 2 seconds, right? Okay. Will it travel distance of 2.5 meter, because everything is in meter, okay, right? That's your second question. Third question is its maximum displacement. Right? Maximum displacement is 0.16 meter. Okay. And fourth one, is it a symmetrical pulse? Is it a symmetrical pulse? Okay. Now, these are the 4 problems associated with this expression, right? Okay. Now, first one is easy. Tell me, first one is easy, yes or no? What is the answer of first one? This is moving in positive x-axis or negative x-axis? Tell me. You have studied, right? If it is omega t plus kx, then it moves in which axis? Yes, very good, Jashan. And Ovas, you are wrong, right? We have studied, na? Last class mein hi humne padha tha. Yes or no? How many of you remember? Tell me. How many of you remember, right? That if it is omega t plus kx, then it is negative. Very good, right? Negative. So see, है ना? Plus है, right? So it is negative. So pulse is moving in negative x-axis. Clear? यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, right? Okay, very good. Now second one. In 2 seconds, it will travel d is equal to 2.5 meter. Tell me. सेकेंड नहीं हो रहा तो थर्ड पहले कर लो. Maximum displacement is 0.16 meter. Maximum displacement is 0.16 meter. Now think about it. ये कैसा फंक्शन है? एक mathematical function है. When this will be maximum. ये सबसे ज्यादा कब होगा? When any fraction is maximum. यहाँ पे कोई हाई फाई मैथ्स नहीं यूज होता है. तुम्हारा ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है. When this fraction is maximum, tell me, right? Need students, J students, ये 10th तक का मैथ्स है. When any fraction will be maximum, tell me. Because maximum displacement is basically the maximum value of this, right? So we know that the fraction is maximum when the numerator is maximum and denominator is minimum. Yes or no? Yes or no? Very good, Anurag. But here denominator cannot be 0, na? We know that, right? Any fraction is maximum when numerator is maximum, right? And denominator is minimum, But we know that this is a square, 4x plus 5t whole square. This is also positive number and this is also positive number. The sum of two positive number can never be 0, right? ये हम लोगों ने 10th तक पढ़ा है. Yes or no? We have studied till, right? We have studied these concepts till 10th class, right? Yes. Okay. Very good. Yes. So what can be done? I can say, okay, sir, 4x plus 5t whole square plus 5 cannot be 0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. But this can be 0 ना? This can be 0. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Yes. This can be 0. है ना? Right? So the minimum value of denominator is 5. So the minimum value of denominator is equal to 5. Right? So what is the maximum value of y? Tell me, everyone. Tell me, what is the maximum value of y? Everyone, tell me. Akshaya, Anisha, Anjali, Anurag, Chulika, Shreya, Riya, Sneha, tell me. Very good, Anurag. Very good. Correct, Anurag. Very good.
right? Very good, सही है. So see, y is given by 0.8 divided by, now ये अगर 0 हो गया, if this is 0, we are left with 5. Very good, Siddharth, very good, right? So 5. So this is equal to 0.16. So I can say, right, maximum displacement is 0.16. That's correct. Correct. सही है ना कि नहीं? सही है कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? बताओ. नहीं ना. D देखो, D पहले D देखो. What kind of function is this? Tell me, what kind of function is this? Even function or odd function? मतलब sorry, quadratic function है. Is this a quadratic function or anything related to quadratic? Yes or no? Tell me. Yes. Now तुमको बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं जानना चाहिए, राइट, नीट वालों को, बट जेई वालों के लिए तो इजी है, बट नीट वालों के लिए बताओ. 1/1/x², ये कैसा फंक्शन है? इज इट अ सिमेट्रिकल फंक्शन और नॉन सिमेट्रिकल? टेल मी. y is equal to 1/x², इज इट अ सिमेट्रिकल फंक्शन, नॉन सिमेट्रिकल फंक्शन? बताओ. x का वैल्यू पॉजिटिव रखो या x का वैल्यू नेगेटिव रखो, वैल्यू क्या आएगी? x का वैल्यू 2 रखो, x का वैल्यू 2 रखो, you will get 1/4. x का वैल्यू -2 रखो, still you are getting 1/4. So this is symmetrical or non-symmetrical? Tell me everyone, this is symmetrical or non-symmetrical? What do you think? Symmetrical, है ना? So if you see your expression, यहाँ पे expression देखो, this is also of the same kind, right? Tell me, ये भी symmetrical लग रहा है ना? This is also of the same kind, yes or no? Right? So I can say that this is also symmetrical, है ना? So D भी सही है, B भी सही है, सही सही, A भी सही है. What about B? What about B? What about B? अब तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, तुमको नहीं लगता है कि सर B तो बहुत इजी है, B तो बेसिक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हो गया, राइट? अब तुमसे पूछेंगे हम, सर कैसे फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हो गया? नाउ टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला. क्लास 9th याद करो, राइट, या उससे भी जूनियर क्लास याद करो, राइट? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. यस और नो? बताओ, इतना इजी है. यस और नो? राइट? यस. और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम पल्स की बात कर रहे हैं, पल्स की बात कर रहे हैं. नाउ टाइम इज गिवन. व्हाट इज टाइम? टाइम इज गिवन एज 2 seconds. Yes or no? Time is equal to 2 seconds. Given. What about speed? बताओ, मैंने इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बताया था. What about speed? Tell me, what about speed? I hope तुमको समझ में आएगा. What is speed? What is wave velocity? What is the formula of wave velocity? Doesn't matter what kind of expression it is. What is the basic formula of wave velocity? कितने लोगों को याद है? Wave velocity is equal to omega by k. How many of you remember this? Raise your hand. ओमेगा पता है हमें? हमें ओमेगा पता है? बताओ साम्या, हमें ओमेगा पता है? हमें के पता है? तो हमें वेलोसिटी पता है, वी पता है, हमें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकलेगा. टेल मी, डिस्टेंस निकल जाएगा. ओके, राइट? So yes, निकल जाएगा. डिस्टेंस इज स्पीड which is omega by k into time. Omega is what? Omega is 5 by time 4, k 4 into 2, right? Yes or no? 2, 2.5 meter. Yes sir, correct. ये भी सही है. Now I hope all of you understood this. सबको समझ में आया? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था उस पे बेस्ड. किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इसमें? Clear everyone? Right? Okay, very good. Okay, right, very good. Okay, so we talked about basic expression of sinusoidal wave, right? Time period. Okay, when we
when the wave is moving in positive x-axis, negative x-axis. We discussed about everything in first class. Okay, so second class we talked about interference superposition. Yes or no? Tell me yes or no. Right? So अभी हम लोग वो नहीं बात कर रहे क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, तो किसी को नहीं समझ में आया है या छूट गया है, आई एम जस्ट trying to explain all the concepts again with the help of problems. Okay. स्नेहा समझ में आ रहा है? फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग लग रहा है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रहा है? टेल मी. नाउ देखो एक, दिस इज, आई जस्ट ड्रॉ अ वेव, राइट? बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, सब बहुत ही फंडामेंटल है ना? सो सपोज आई ड्रॉ वेव लाइक दिस. सपोज आई ड्रॉ वेव लाइक दिस. ठीक है, राइट? ओके, नाउ just by seeing at this wave, can you tell me, right, that this wave is having initial phase, yes or no? Tell me, is this having initial phase, yes or no? बस ये बता दो. Yes or no? बताओ. इसका इनिशियल फेज है कि नहीं? इनिशियल फेज जीरो है कि कुछ है? I'm not asking you to find the value. I'm just asking, is the initial phase of this wave is zero or is it something? Tell me. But just by looking at this wave, non-zero, right? Easy. Yes or no? Non-zero. It is there because it is not starting from origin, right? It is not starting from the this point, right? So it is sine omega t plus phi, non-zero. Yes, very good. Okay, now question kya hai? Question is, this is a snapshot, right? At a given time interval, है ना? At a given time interval, which is given by 0.3 seconds, right? The snapshot of the wave is like this. Okay, and it is given that the wavelength is, the lambda wavelength is 7.5 meter. This is the wavelength. Okay, amplitude is given by this 2 centimeter. Okay, right? Clear? Now tell me, what do you think? What is the equation of this traveling wave? Tell me. And I have given you the initial condition also. If initial condition, if the crest P, this is point P, this is point P. If the crest P was at x is equal to 0 and t is equal to 0, okay, write the equation. Write the equation of traveling wave, okay, right? So तुम लोग को ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना है ना? So तुम लोग पहले ये सोचोगे, okay, right? Let's see, guys. Let's write the equation that we already know. Y is equal to what? Tell me. Y is equal to what? A sine omega t, right? Plus minus kx plus phi. ये general equation that we already know. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Step by step. Everyone think about it. Step by step. Now, you have to write this equation. So you should know various parameters. Amplitude you should know, omega you should know, k you should know, phi you should know, right? So I'm giving you 2 minutes. Can you figure it out? Tell me, can you figure it out? Think about it. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही फंडामेंटल. Okay. Okay. Now, ध्यान दो यहाँ पे. ये red wave देखकर what can you say? Tell me, what is initial phase? ये wave किसका है? Cos का है कि sin का है? Tell me. This is cos function or sin function? First question. This is cos function or sin function? Tell me. Cos है कि sin है? Cos है ना विवेक? Cos है. Very good. So
the initial phase, this phi should be equal to what? Wait, everyone. Wait. Wait, my tab got discharged. Just give me 1 minute. Right, pi by 2. Very good, Vivek. So the phase, right, is pi by 2. है ना? Phi is pi by 2. Initial phase is pi by 2. सबको समझ में आया ये? Tell me. सबको समझ में आया? Initial phase is pi by 2. Sorry, pi by 2. है ना? So this is equal to pi by 2. Pi by 2. Clear है? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Now, lambda is already given. है ना? Lambda is 7.5. Right? Lambda is 7.5. And we know that k is equal to 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. So k we know, yes or no? Tell me, yes or no? Yes or no? Okay? So ये दोनों तो हो जाना चाहिए था. ये दोनों आराम से हो जाना चाहिए था, है ना? ये दोनों सबका हो गया होगा. K और phi सबका निकल गया होगा. Right? Now the next question is, sir, omega कैसे निकालें? How to find omega? And we know that omega is equal to V into K. Yes or no? Then your question should be, sir, K to we know. What to do with this V? ये V कहाँ से आएगा? Tell me, V कहाँ से आएगा? है ना? Now, just think of this. ये जो point P है, ये जो point P है, वो यहाँ से यहाँ गया. कितनी देर में गया? 0.3 सेकंड में गया. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Distance दिया है 1.2, टाइम दिया है 0.3. इनको वेलोसिटी निकल जाएगा. Yes or no? Tell me, yes or no? Right? So what is the velocity? V कितना है? What is V? V is equal to what? Distance, which is 1.2, time, which is 0.3. So sir, this is basically 4 meter per second, 4 centimeter per second, sorry. It's centimeter, right? है ना? So omega V निकल गया 4 into K, which is 2 pi by lambda. Now, can you find the equation now? Tell me, everyone, can you find the equation? Yes or no? Right? Now, the only thing is plus or minus. खुद देखो ना, ये जो पॉइंट है वो आगे की ओर मूव किया ना. Yes or no? Think about it. ये पॉइंट आगे की ओर मूव किया है, राइट? तभी ना, देखो ये ऐसा होगा, ये आगे की ओर मूव किया, ये भी पॉइंट आगे की ओर मूव किया. So obviously this is moving in positive x direction. That's why we will take negative, right? So when you talk about this, equation would be y is equal to a, which is given as 7.5 cos omega t minus kx. Clear, everyone? Tell me, clear? है ना? ये ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा इटसेल्फ. तो सबको बेसिक आइडिया हुआ. फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? पहले क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. ये सब क्लियर हो गया? टेल मी. Okay, very good everyone. Right, very good. Now concept 2, right? Concept 2. As I have told you, what is the velocity of wave? Tell me, in a thread. Wave velocity का फॉर्मूला बताओ. I hope सबको याद होगा. मैंने बोला था कि तुमको बस फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं चाहिए होगा, right? But let's see. कितने लोगों को पता ही है? Tell me, what is this? Root T by mu. Yes or no? Tell me, yes or no? Where T is tension and mu is mass density or linear mass density, so mass per unit length. Agree? सबको याद होना चाहिए. ठीक है? Now let's try to derive it. I was hoping कि मैं इसको दूसरे क्लास में derive कर लूं, but let's derive it. Everyone think about it. Okay, let's derive it. How many of you know, how many of you remember this? I hope all of you should remember this. हम लोगों ने आज start में ही किया है. d square y by dt square is equal to v square d square x by d square y by dx square. Yes or no? That is the condition of wave. Yes or no?
Agree? Right? Now, let us take a pulse like this, right? I'm very bad at drawing, so I'll just use this. Okay, ठीक है, हम ऐसा कोई pulse ले रहे हैं. Suppose this is a pulse, right? ये एक pulse है ना? I'm just taking this pulse, right? Pulse ऐसा ही होता है ना? Pulse का एक cross section लिया हमने, तो ऐसा ही होता है. How many of you agree that yes sir, pulse तो ऐसा ही होगा ना? Pulse तो ऐसा ही होगा, right? This is pulse in a thread, right? ऐसा ही pulse है ना? Move कर रहा है ऐसे, ये रस्सी ऐसे move कर रहा है, ठीक है? Right? Now, let's talk about the forces on this pulse, right? Everyone talk about the forces. I hope all of you know about tension force, yes or no? Tell me. सबको tension force पता है? पता है ना? Yes sir, पता है sir. So let's take 2 points, right? Let's take this point. Okay, I'll just take 2 points. Let's take this point as point A and this point as point B. This point as point B. Now, एक चीज बताओ, tension direction क्या होता है? What is the direction of tension? बहुत simple concept. What is the direction of tension? बहुत simple. पूछेंगे, कोई बहुत difficult नहीं होता है, but you have to ask yourself, right? Physics में पूछना होता है. What is the direction of tension? Always tell me, tangential to the wire, yes or no? Tell me. है ना? Along the tangent of the wire, yes or no? बताओ ये. पता है कि नहीं? Tell me. The direction of tension, the direction of velocity of a point in any curved path is always tangential. Yes? Agree? Tell me. So for this, the direction of tangent should be like this. And for this point, it should be like this. Yes or no? Step by step, step by step. Okay? Okay. Now I'll just say that's the, okay, I'll just take this. And we know that if we have same thread, the tension would be same. ये भी पता है एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट. अगर थ्रेड सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, हाँ या ना? अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम है, हाँ या ना? यस, राइट? नाउ सर ये तो समझ में आ गया, तो इजी था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सेकंड कॉन्सेप्ट, वी नो वेक्टर्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो वेक्टर्स? रेज योर हैंड. आई होप एवरीवन नो वेक्टर्स, राइट? So resolve this. If we resolve these two vectors, if we resolve these vectors, so this angle is theta. So this is what? I'll just say this is T1x, right? And this is T2, or sorry, T1y. है ना? It's a component, right? It's a component. Clear ये? Clear? Yes? Resolution of vector, step by step. नहीं समझ में आए पूछो, right? श्रेया समझ में आ रहा है? कोशिश, स्नेहा, Malik, Nishita, Pritam, you joined just now. What were you doing from past 45 minutes? Priyanka? Right? Now, in the same way, this tension will also have two components, ye component or ye component, and the horizontal angle is suppose alpha. ठीक है? So this is T2x and this is T2y. यहां तक में जो दिक्कत है बताओ, यहां तक में किसी को दिक्कत है? बता दो, यहां तक में किसी को दिक्कत हो रहा है? सबको समझ में आया है स्टेप बाय स्टेप? No? Okay, right? Okay, now I assume that let's take this xy plane. Okay, एक xy plane ले ही लो. This is happening on xy plane, right? Like this. Okay, तुमको reference मिल जाएगा, ठीक है? Now, so I can say this point, right? When this point moves to this position, right? The angle is changing, so the component of tension is changing. ये सबको समझ में आ रहा है ना? So because of this, there will be net force in upward direction. Yes or no? है ना? Net force ऊपर की ओर है, तभी तो ये ऊपर उठ रहा है, नहीं तो ऊपर उठेगा ही क्यों? Agree? Tell me, agree? Right?
नेट फोर्स शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका ऊपर उठ रहा है, एंड इस डायरेक्शन में इसका नहीं आगे बढ़ रहा है, यस और नो? बताओ, सबको समझ में आया? विजुअलाइज करो, अगर फोर्स ऊपर नहीं हो तो ऊपर क्यों उठेगा, फोर्स आगे की ओर नहीं हो तो आगे क्यों जाएगा? एंड वी नो दैट पल्स इज मूविंग अप एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्लियर ये चीज? टेल मी, ये सबको समझ में आ रहा है? टेल मी, ये सबको समझ में आ रहा है? और सबको एटलीस्ट बेसिक फोर्स इक्वेशन लिखने तो आता है ना? बेसिक फोर्स इक्वेशन तो लिखने आता है। सो इफ आई आस्क यू, सर व्हाट इज एफ वाई, व्हाट इज फोर्स इन वाई डायरेक्शन? टेल मी व्हाट इज फोर्स इन वाई डायरेक्शन, टेल मी, बताओ। ऊपर उठ रहा है तो क्या होना चाहिए? सबको बताओ, वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे? टेल मी एवरीवन, वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स है? स्टेप बाय स्टेप सोचो, ये T1y है, ये T2y है, यही दो है ना, राइट? So what do you think? What is Fy? Should it be T1 minus T2y? Should it be T1y minus T2y, or the other way around? Is this correct? Or I should write opposite? Very good, Soumya. T1y minus T2y, है ना? Because obviously the force in upward direction is more than the force in downward direction. किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? बताओ। Tell me. No? Okay, very good. So I'll say like this, Fy is equal to T1y is what? T1y is what? T sine theta. T sine theta minus T2y is what? T, tell me. I'm just talking about this because direction हम लोग दे लिए ना. T sine alpha. Step by step. किसी को भी दिक्कत है पूछो, यहाँ तक भी तो दिक्कत है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? So Fy is equal to T common sin theta minus sin alpha. ठीक है, राइट? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यस और नो? यस और नो? राइट? ओके, नाउ किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो अभी पूछ लो, ठीक है? ये सबको समझ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट? मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को बहुत दूर दूर बनाया है ताकि तुम लोग देख पाओ, बट सपोज दिस पॉइंट, these two points are very near to each other, right? बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, राइट? मैंने बड़ा बनाया कि क्लमजी ना हो जाए, बट सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, बहुत छोटा डिस्टेंस है मान लो, राइट? if this distance is dx, then what will happen? Tell me, then what will happen? Tell me, if this distance is dx, then what will happen? थोड़ा सा यहाँ पे नीट वालों मैथ्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, right? Don't you think that this distance, if this distance is very small, then I can say that theta will almost be equal to alpha? बताओ, yes or no? सोचो एक बार, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, मतलब ये दो पॉइंट बहुत ही पास पास में है, सो थीटा शुड बी इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, yes or no? Right? Yes? Okay? So I can say, okay, sir, in this case, theta minus alpha can be written as d theta. Yes or no? Yes or no? Step by step. Step by step. थोड़ा सा मैथ्स यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट? इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ तक किसी दिक्कत है, यहाँ तक किसी दिक्कत है, राइट? आई जस्ट यूज सम मैथ्स जो कि यहाँ पे होता है, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, राइट? और अगर थीटा और अल्फा बहुत ही छोटा है ना, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, which can be written as tan theta, right? In the same way, sin alpha can be written as alpha, which can be written as tan alpha. ये तो पता है ना, this is something that will be used a lot in physics, बहुत यूज होता है। नीट वाले तुम लोग ये जानते हो क्या? Do you know this? If theta and alpha is very small, very small, पता है नहीं ये सब? ओके, वेरी गुड देन, वेरी गुड, राइट? सो बस ये यूज करूंगा मैं, ठीक है? ये यूज करूंगा, राइट? नाउ लेट्स सी. So I can say, okay, sir, Fy, I'll just use this directly.
It is t. मैं step by step use कर रहा हूँ. It is what? Theta minus alpha, right? Because again sin theta is very less, theta alpha. This can be written as t d theta, right? And again I can use theta is almost equal to tan theta, so I'll just write t d tan theta. ये तीन स्टेप समझो, ये तीन स्टेप समझो. यहाँ पे approximation यूज हुआ है because we assume, this is assumption, right? This is assumption that theta is very small. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक में सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो. बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाथ डालो. श्रेया, Imba, Samya, Sai Smriti, you also joined late. Priyanka, Vivek, Ronak, Pritam, Nishita, Anurag. Okay, now, okay, right? अब थोड़ा सा और maths use होगा. How many of you know this? How many of you know this? This is x, right? This is x and this is y. This is x and this is y. So how many of you know this, that basic definition of tan theta is dy by dx? Chapter 1 physics में, chapter 3 maths में, chapter 1, right? Basic रहा गया. Slope is the definition of tan theta, right? The geometrical meaning of slope is, right, or the in terms of trigonometry, slope is tan theta, which is equal to dy by dx, right? Very good everyone, very good. So don't you think कि तुम्हारा formula आ चुका है अब तक? बताओ, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा actual आ चुका है? What is fy? Tell me, what is fy? Step by step. What is fy? Tell me, what is fy? Now think about it. यहाँ पे जो है तुम छोटे से point की बात कर रहे हो. So right, you know that if you talk about small point जिसका thickness dx है, so mass will also be dm. Mass will also be dm, and this dm is equal to mu, which is mass per unit length, into dx. Yes or no? Right? These are the prerequisite thing, right? एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हो, तुम एक बहुत ही छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हो वायर के, जिसका मास, टोटल वायर का मास दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो म्यू निकल जाएगा, है ना? सो इस छोटे से टुकड़े का मास क्या होगा? ये डिस्टेंस अगर dx है, सो इट शुड बी, राइट, म्यू इनटू dx. ठीक है, राइट? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये जो है, ये सब प्रीरेक्विजिट है जो मुझे पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स पुट इट डाउन. वी नो दैट व्हेन यू टॉक अबाउट fy, right, which is equal to what? dm, mass into acceleration. Acceleration in which direction? Acceleration in which direction, guys? Tell me. A, y, yes or no? And this is equal to t d. This is differentiation one, this is differentiation one, right? Theta is dy by dx. Agree? Tell me. Agree? Step by step. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक स्टेप में समझा रहा हूँ, एक स्टेप में समझा रहा हूँ. यहां तक में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? अब dm को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है. You already got your answer. ठीक है, right? d square y by dt square into mu into dx is equal to tension into d dy by dx, right? dx को इधर ले आओ, so mu को इधर ले आओ, so d square y by dt square is equal to t by mu, because ये दोनों कांस्टेंट है, ब्रैकेट d dy by dx whole dx. याद होगा कि ये जो फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट दिस फंक्शन, राइट? ये जो होता है डिफरेंशिएशन, दिस इज नथिंग बट d square y by dx square, है ना? राइट? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. मैं रुक रहा हूं, मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ, ठीक है? तो तुम थोड़ा सा पूछो. पता है ना, s, I'll just take the example, s ds by dt is v and dv by dt is equal to a, right? Which is basically d
into ds by dt which is actually d square by dt square. So ये mathematical representation है double differentiation का, है ना, right? This is the mathematical representation double differentiation. ठीक है, so अब देखो, I hope सबको समझ में आ गया होगा, है ना? And we know that equate करो v square d square y by dx square. ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, है ना, जो कि हो रहा है. So this term should be equal to v square. So what is v? V is equal to root t by mu. Proved. Prove हो गया ये? सबको समझ में आया ये? Tell me, सबको समझ में आया? Yes or no? साम्या, अनुराग, निधि, निशिता, खुशी, प्रीतम. प्रीतम तुम बस ये याद रखना, प्रीतम v is equal to root t by mu 10, बस यही याद रखना है, राइट? तुमको रिविजन नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है. रिया सिंह, रिया झा, रिया, अनामिका नहीं आ रही है क्लास में? इज एवरीथिंग फाइन? ओके. श्रेया, चलिका, क्लियर? ओके ओके. जस्ट आस्क हर टू मैसेज मी ना आफ्टर द क्लास. ओके ओके. सो ये हो गया. दिस इज फॉर, अगेन, राइट, जस्ट राइट इट डाउन. दिस इज फॉर वायर, राइट? दिस इज फॉर पल्स, है ना, एक पल्स की बात कर रहा हूं जो ऐसे मूव कर रहा है. दिस इज फॉर अ पल्स. v is equal to do t by mu, right? हम लोग बहुत ज्यादा derivation नहीं करेंगे. This is what we will be using, and we know that mu, which is mass per unit length, can also be written as, tell me, I hope all of you remember, density into area, है ना, density into area. So this can also be written as root t by rho a, जो हम लोगों ने ड्राइव किया था. ठीक है. Now this is for what? This is for transverse wave. This is for transverse wave. When you talk about longitudinal wave, longitudinal, okay. Now in longitudinal, right, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, हम लोगों ने वो भी डिराइव किया था. बट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, right? It is bulk modulus by density. I hope all of you remember the derivation of that. Yes or no? Tell me yes or no. है ना, राइट? अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है, note that bulk modulus is equal to pressure in isothermal condition. Isothermal condition जो कि जनरल है. जनरल कंडीशन इज आइसोथर्मल. ठीक है, जनरली तुमको आइसोथर्मल कंडीशन लिया जाएगा, राइट? एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन ने बहुत जगह हाथ डाला है अपना, राइट? दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला, राइट? एंड दिस इज जनरली फॉर गैसियस मीडियम, है ना? ठीक है, राइट? क्लियर? Now, but this formula is not correct. This formula is not correct always, right? So there was another scientist called as Laplace. इंजीनियरिंग में जाओगे तब तुमको बहुत सुनने को मिलेगा Laplace, because इन्होंने तो पूरा एक मैथ्स का एक चैप्टर बना दिया, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जो तुम लोगों को अभी नहीं मालूम पता चलेगा. So इन्होंने बोला कि this so if b is equal to p, he said that b is equal to root p by a, है ना, p by a, जो कि सही आया था, जो कि इससे मैच कर रहा था, राइट? डायमेंशनली इससे मैच कर रहा था. बट he said that no, that cannot be true always depending on the condition, right? So he said that the velocity is given by gamma p by a, gamma p by a, and technically both are correct because, right, the formula root b by rho, sorry, this is rho, my bad, this is rho, okay, right, root p by rho, b by rho holds true, right? So I can say this b, which is bulk modulus, is equal to p, pressure in isothermal condition, है ना? But the same bulk modulus is equal to gamma p in adiabatic condition. ठीक है, क्लियर ये चीज? सबको समझ में आ रहा है? टेल मी, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? टेल मी यस और नो.
स्टेप बाय स्टेप। किसी को दिक्कत है यहां तक में? किसी को दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना? फिर तुम पूछे सर और कोई फॉर्मूला है क्या? राइट, I'm like ठीक है, देखते हैं, है ना? राइट, बिकॉज वी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस रिलेशनशिप? स्ट्रेस इज इक्वल टू y into strain। आई होप सबको याद होगा ये, राइट, है ना? ना अगर नहीं भी याद है, मान लो नहीं भी याद है, तो वी नो दैट बल्क मॉडुलस या y या eta, all of them are modulus of elasticity, modulus of elasticity or rigidity, right? Modulus of elasticity or rigidity, या rigidity, yes or no, tell me, सबको पता है? So अगर मैं v is equal to रूट b by mu लिख सकता हूँ, b by rho लिख सकता हूँ, किसके लिए? गैसेस के लिए। So don't you think, right, this is again, this is for longitudinal, this is for longitudinal. So for longitudinal, right, can't I write v is equal to root y by rho? Tell me. But ये किसके लिए हुआ? This is for gas, this is for gas, longitudinal wave in gas, longitudinal in gas। तो फिर पूछो सर ये किसके लिए? ये किसके लिए ना? मेरा सवाल ये है कि इफ यू टॉक अबाउट रॉड, थिंक अबाउट इट, अगर तुम रॉड की बात करो या कोई भी सॉलिड की बात करो, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले तो ये सवाल पूछना है ना, इज longitudinal wave possible in case of solids? The question is yes, yes. We already know that sound travel faster in solids or liquids as compared to gas. So obviously, right, longitudinal wave can pass through solids, but we don't have bulk modulus in solid, but we do have this Young's modulus. So this formula is for longitudinal wave in solids. क्लियर ये चीज? टेल मी, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? टेल मी, सबको समझ में आ गया? ये किसके लिए? ये किसके लिए? दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव, velocity of transverse wave। ये किसके लिए? velocity of longitudinal in gases, right, or liquid। in this is velocity of longitudinal in solid। सबको समझ में आया ये? टेल मी, सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। टेल मी, किसी को भी दिक्कत है यहाँ पे पूछो। टेल मी, सबको क्लियर हो रहा है? ओके ओके, सो लेट्स ट्राई वन सिंपल प्रॉब्लम। ओके, एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं, राइट? सो लेट्स सी। ना अगर क्वेश्चन की बात आती है, so what can change, right? Obviously force, because T by mu, na, T by mu, so only thing that can change is force, yes or no? Suppose I'm having a setup like this, right? A setup like this, ठीक है? ये setup है, this is A, this is point B, this is mass M, and this is a pulley, okay, okay. So the question is, this is your rubber tube, this is your rubber tube, and the length of the rubber tube is given by 12 meter, right? This AB is your rubber tube, okay, right? Okay, and the mass of this tube, mass of the rubber tube, okay, is given by 0.9 kg. Okay, now this support is fixed, ये fixed है, this point A is fixed, ठीक है? This point A is fixed. Now it is attached with this mass, okay, this is attached with a mass of 5 kg, 5 kg, समझो, step by step समझो, right? जो कि पुली से लटका हुआ है ना? Okay, now इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे एक ट्रांसवर्स वेव हिट किया, right? It is, right, this tube is struck by a transverse wave at this end, okay, clear है, right?
So the question is, find the time required. Find the time required for the pulse to reach point B. To reach point B. A पे स्ट्रक किया ट्रांसवर्स वेव, राइट? बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल है, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, ठीक है? Now we know that time is equal to what? Distance by speed. Distance by speed. ये बस यूज करना है, ठीक है? ट्राई करो एक बार एवरीवन, ट्राई करो सबको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो, राइट? स्टेप बाय स्टेप. टेंशन शुड बी इक्वल टू mg, yes or no? Yes or no? राइट? और म्यू, सर म्यू तो पता है ना, मास दिया है, लेंथ दिया है, तो म्यू पता है, which is 0.9 by 12. फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हुआ? Is it formula putting getting? Is this problem formula putting getting? Can you solve this now? Shreya, Priyanka, Chulika, Abhiram, Oves, everyone, हो जाएगा? बताओ हो जाएगा? ठीक है? Okay, okay everyone. Thank you everyone. Next. ठीक है, तो ये किसी को दिक्कत है अभी भी? बताओ सबको समझ में आया कि नहीं है? सबको समझ में आया? Raise your hand everyone, raise your hand. If you got this, raise your hand. Okay, very good. Next question based on this concept only. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? जो वायर था वो, जो थ्रेड था, ट्यूब मास था, बट वायर वाज massless. Now अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, है ना? Now suppose I'm having this is your वायर. ओके, ये तुम्हारा वायर है, राइट? And this is not massless. This is not massless. ये massless नहीं है, ठीक है? This is not massless, right? और इसका यहाँ पे pulse है. So we have a pulse like this. Okay, right? This is the setup. So यहाँ से यहाँ तक का distance, यहाँ से यहाँ तक का distance is suppose x, and the total length is given by L. Total length is L, ठीक है? ऐसा समझो, है ना? और ये this is your ceiling. Ceiling से लटका हुआ है, ceiling से लटका हुआ है. Mass of this rope is 0.1 kg. This is a uniform rope. Mass is same throughout, right? So uniform है, ठीक है? And the length L is given by 2.45 meter. 2.45 meter, ठीक है? Right? ये है. Now question A. Question A is find speed of transverse wave. Okay, speed of transverse wave in the rope, right? At x is equal to 0.5 meter. 0.5 meter. Okay, right? And B, find T, right? This is point A, this is point B. Time taken to reach by this pulse to reach from A to B. From A to B. Okay, तुम लोग लगा कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे and all those things. Now एक चीज बताओ. When you talk about tension, concept, first concept, सबसे पहला सवाल तुम सब अपने आप पूछना है. First concept, sir, tension same रहेगा क्या? Tension is constant throughout. Tell me. सबसे पहला सवाल तुमको अपने आप पूछना है. टेंशन सेम रहेगा क्या पूरा? Yes or no? Ask this problem first. Tell me. Will tension be same throughout? Variable, yes or no? क्यों? क्योंकि मास चेंज कर रहा है ना,
थिंक अबाउट इट, मास चेंज करा, अगर तुम इस पॉइंट पे लोगे, इस पॉइंट पे लोगे तो इतना मास के कारण फोर्स लगेगा नीचे की ओर, अगर तुम इस पॉइंट पे लोगे तो इतने के कारण लगेगा, तुम इस पॉइंट पे लोगे तो इतने के कारण लगेगा, इस पॉइंट पे लोगे तो पूरा के कारण लगेगा। यस और नो, टेल मी, थिंक अबाउट इट, है ना? बिकॉज if you take this point, so mass below this point is this much only, है ना? Clear ये चीज, tell me, clear ये चीज, right? So I can say, sir, tension is not constant, tension is not constant, है ना? Clear? Tell me, yes? So how to find tension? Sir, we know that tension is equal to mg, as simple as that, है ना? mg, as simple as that. And this mass is variable because तुम इस पॉइंट पे लोगे तो ये इतना ही मास होगा, इस पॉइंट पे लोगे तो इतना ही मास होगा। So can I say the sir tension should be equal to mu, which is mass density, into x, the distance that we are talking about, this is the mass, into g. Clear है ये चीज? सबको समझ में आ गया? Tell me, सबको समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ? राइट, अब फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हो गया कि नहीं? G10 ले लो ना, G10 ले लो, कैलकुलेशन के लिए अच्छा होता है। Now we know that velocity is equal to root t by mu. Simple. पुट कर दो, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग हो गया। T is equal to what? Mu gx by mu, mu कट गया, which is equal to root gx, है ना? G गिवन है, x गिवन है 0.5, v निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? टेल मी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सो A इजी है, A इजी है, A सबसे निकल गया होगा। Okay, Soumya, I'll explain again. Now, think about it. In this problem, what is given? That the mass of this rope is, tell me, 0.1 kg. है कि नहीं? Tell me, yes or no? Yes or no? पहला सवाल। So what about tension? What about tension? Tension at each and every point. Can I say the tension at each and every point will be the same? Tell me. Can I say the tension in each and every point is same? Tell me. Think about it. हाँ या ना? टेंशन सेम कब होता है? जब रोप मासलेस होता है। समझ में? ये कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। The tension throughout the rope is same whenever the rope is massless. If rope is not massless, then the tension is not same. It will be changing, right? Because if you talk about this point, then the amount of rope below this point, right, will exert force in downward direction. Yes or no? Right? And the mass will be because of this rope only. But when you talk about this point, the mass will be because of whole rope, this rope. So as the length increases, mass increases, right? This mass, which is m dash, changes, and as m dash changes, tension changes, right? And we know that when you talk about mass, mass is equal to what? Total mass by total length, which is mu, into this distance. It will give me the mass at point x. So tension can be given as mu x into g. Okay, got it? Soumya, got it? ये सबको समझ में आएगा? ओके, सो फिर वेलोसिटी निकल गया ना, तो ये इजी है। पार्ट ए इज इजी, पार्ट ए इज इजी, पार्ट ए इजी है। तो पुट करोगे तो निकल जाएगा रूट 10 into 0.5, which is root 50, root 5 ना, रूट 5 वाला निकल जाएगा 2.2 समथिंग मीटर पर सेकेंड। ये तो इजी है ना। Now B part is difficult. Everyone focus. B part difficult. V is equal to what? dx by dt. Yes or no? पता सबको? Actually it's not difficult. अगर तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना चैप्टर 1 का काइनेमैटिक्स, तो इजी है। And we know that what is V? V is equal to what? Root gx. कितने लोगों को इंटीग्रेशन आता है? यहाँ पे हाथ डालो। कितने लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है? बिकॉज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, राइट? तुम थोड़ी ना यहाँ पे 2.45 by
ये वेलोसिटी कर दोगे, बिकॉज वेलोसिटी चेंज करते रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, बिकॉज फोर्स लग रहा है, राइट? दैट्स व्हाई यू हैव टू इंटीग्रेट। तुम लोग में से कोई ऐसा होता है, सर टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हिच इज 2.4 बाय velocity which is 2.2. Sir, it is 1 point something, right? 1.02 something, right? हो सकता है तुम्हारा आंसर सही आ जाए, हो सकता है, हो सकता है, right? But this is basically a coincidence, right? Because velocity will keep on changing with respect to distance, है ना? Tell me. So let's see. So I can say dx by root gx is equal to dt, है ना? So integration 0 से t and 0 से l. Okay. So t will be equal to, now I hope all of you know the integration of root gx. पता है ना? Tell me, पता है कि नहीं पता है? Right? So it will be 2 root L by G. 2 root L by G. Anisha, it will be 2 root L by G, na Anisha? है कि नहीं? Right? X to power minus 1 by 2 is equal to what? है ना? X to power plus 1 by 2 divided by 1 by 2. है ना? So which is 2x to power 1 by 2. ठीक है? यही होता है ना? ठीक है? तो L का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, राइट? So coincidentally this is also your 1 second. Coincidentally this is also 1 second. ठीक है? But I hope सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? Yes or no? Raise your hand. Okay. ठीक है? So we will have a break of 5 minutes. ठीक है? We will have a break of 5 minutes. Right? Because today we'll be having a longer class now. So we'll be having a break of 5 minutes.